अगर मैं एक स्पाई होता तो मेरी लाइफ कैसी होती? लगता है किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से ही पूछना पड़ेगा। वेलकम एवरीवन, आई एम करण एंड आपके पैशंस को कन्वीनियंटली प्रोफेशन में बदलना हमारा मिशन है। हमने हॉलीवुड टीवी शोज़ और मूवीज़ में बहुत देखा है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के बारे में, बट एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, वो क्या मिशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इस लाइफ के एडवांटेजेस क्या हैं, आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। हम ये भी कवर करेंगे कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें करियर ग्रोथ कैसी होती है। वेलकम एवरीवन टू द पॉडकास्ट। आई हैव विद मी मिस who has been working with IB for 8 to 10 years now. First of all, sir, thank you so much for being on the show and it's a pleasure to have you here. Thank you, Karan. I really appreciate it. Thanks. Sir, IB, इंटेलिजेंस, ये सब एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नॉर्मल पब्लिक को इतना जानकारी नहीं होती है। जो उनको पता चलता है वो टीवी शोज या मूवीज को देखकर पता चलता है, और आजकल के रिसेंट टाइम्स में नेटफ्लिक्स वगैरह के बाद इन शोज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। सो आज का शो इसी के बारे में होगा कि क्या हम वो जो देखते हैं वो सही है, और एक्चुअली IB में रहकर आपकी क्या लाइफ होती है, कैसे एंट्री करते हैं। तो बिफोर वी बिगिन इनटू ऑल दिस, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज IB और इसका गवर्नमेंट में क्या रोल होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका गवर्नमेंट में। Okay, so IB basically is an organization which is there to promote and support national security. That is our main concern. And we play on the home turf. Like, हम लोगों को कंट्री के अंदर रह के कंट्री के अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं regarding intelligence gathering, that is what we do, to gather intelligence and provide support to the parallel organizations which are our muscles of the governance or security systems. By muscles, I mean to say, like, we are the brain for the for security of a body, and the police and probably other organizations which I would like to talk about later. These are all muscles which exactly secure your body. In this case, our body is our country, India. आपने बोला कि इंटरनल इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है IB मेनली, तो ये किस टाइप का केसेस रहते हैं, क्या क्या होता है इन केसेस में? So हमारे पास कोई केसेस नहीं आते हैं, to be very honest. It's majorly about like, let's say we are in a place and हम लोगों को कोई भी रेड फ्लैग आता है कहीं से भी, and these red flags might come from any of our networks, informing networks that we consider. ये जनरली टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड ही रहती है? नहीं, ऐसा मूवीज में दिखाते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है, बट इट इज एनीथिंग दैट हैम्पर्स आवर नेशनल सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल, it might be terrorist, it might be some Maoist activities, or it might be counterfeit currencies, or it might be drugs, narcotics. So we forward the information to the necessary, like, important, like the concerned department. If it's narcotics, we'll probably pass on to DRI, like Directorate of Revenue Intelligence, or NCB, Narcotics Control Bureau. Otherwise, हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग इस साइड पे भी आ सकते हैं. पुलिस, अगर हमें टेररिस्ट को किसी को कैप्चर करना है तो we can't arrest a terrorist. Ideally, we don't have the power to arrest or take any action. We are just there to provide intelligence, a sort of report, you can say, or inform the concerned authorities about a problem, and they'll have to take the actions. Like, we'll be supervising that. That is another part. So that is how the role IB plays in the system to give information to the concerned muscle in this case. So जितनी भी गवर्नमेंट की मसल आर्म्स हैं उनमें IB sort of intelligence provide करती है. Are there other parallel intelligence organizations which do the same thing? Yes, there are. So definitely बाकी जितने भी मसल्स हैं वो अपने अपने मसल मेमोरी पे काम करती हैं एक तरह से. As in पुलिस की भी डेफिनेटली एक नेटवर्क से रहता है वो अपने, बट उनका पर्पस अलग रहेगा. जैसे कि पुलिस का काम है कि क्राइम सॉल्व करना, क्राइम उनको कम करना है, तो they'll have network about murder solving cases, someone who's a serial murderer or someone who's a rapist. उनका काम क्राइम और या फिर कोई चोरी हुई तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, हमारा काम नहीं है.
या फिर अगर एनसीबी की बात करें, they'll check on the airports पे ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ रही है, उनको लग रहा है कोई कोलंबिया से कोई कोकेन आने वाला है, तो they'll probably get activated there based on their networks. Ours is more focused about anything that concerns national security. Probably NCB को हमने वो एयरपोर्ट वाली इंफॉर्मेशन हमने पास की, that might happen. Like the first tip or the initial hint कि ये ऐसा होने वाला है, concerned organization को आप पास करेंगे and then they will act on it. Correct. Using their own networks and they'll probably liaison with you for their work. Correct. That is how things work on. तो ये रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती हैं? रॉ का एक्चुअली जो सिस्टम है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इज डिफरेंट, सो आई एम नॉट गोइंग देयर राइट नाउ, बट रॉ का अगर बात करें, रॉ इज एग्जैक्टली व्हाट आईबी डज इन इंडिया. So as long as you are within the national boundaries, be it Lakshadweep, Andaman, or you're in Goa, or you're in Jammu Kashmir or Leh, even if it's concerning Pakistan, let's say there are some infiltration or some sort of drug movement across the border, BSF area में, तो IB activate हो जाएगा वहाँ पे generally. But अगर हम लोग बात करें, let's say we have some operations abroad, हमें लगता है कि अलकायदा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें अलकायदा जैसी कुछ अफगानिस्तान में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसका कुछ इंडिया में कुछ प्लान चल रहा है, देन रॉ इज सपोज टू गेट इन्वॉल्व. रॉ इज सपोज टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू दी लोकल अथॉरिटीज which might involve again some masalan. Maybe they'll just pass on the information to the PMO. They'll eventually pass on this to some concerned authority. So definitely हर किसी का एक कंटेनर बना हुआ है वर्क का कि हाँ हमें यही काम करना है, लेकिन बाकी सबका ऐसा है कि हमारा IB and RAW particularly are just there for information gathering. That's what we do, and we are very sophisticated and clean neat there in our jobs. We don't get involved. हम लोग ऐसे नहीं होगा कि हम काम भी हम पूरा, we will supervise it till it's succeeded completely, but we won't get involved. ये कि हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं. तो आप पब्लिक अपीयरेंस में आप कभी ओपनली नहीं आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं. Everything that you do is like secret and you cannot be officially on the ground in your uniform or something doing. So we don't have a uniform. अच्छा. We are like जैसे पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, ये सब चीजें दिखाने के लिए होती हैं, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स टू देयर बेस्ट. बट कुछ चीजें छुपी भी रहनी चाहिए, लाइक यू कांट ऑनर और यू कांट गेट अप्रिसिएशन फॉर एवरीथिंग. यू विल गेट इट इंटरनली, बट people won't recognize you, and that's how this job works. We accept it. We are fine, and we are having some other sort of satisfaction from our jobs. ऐसा. तो आपके जो sort of secret career है, इसके बारे में आपकी families को भी नहीं पता होता, किस extent तक पता होता है? So पता तो नहीं होता. Actually हमारे neighbors को, हमारी family को, they might have a hint, and theoretically we are not allowed to tell them, but idea होता है कुछ लोगों को, and it should be within acceptable range probably. So probably your wife would know that you work for the government, but not exactly what you work on. No, we can't tell them. We can't. शादी के टाइम पे बड़ी दिक्कतें आती हैं इस वजह से. जनरली क्या कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में, कह रहे हम लोग जो बताते हैं वो भी मैं आपको भी नहीं बता सकता कि क्या बताते हैं हम लोग, बट देयर इज अ सेफ वे आउट टू टेल कि हाँ ठीक है मैं ये काम करता हूँ, बट इट्स यू कांट टेल. एक वो होती है मतलब ऐसा कोई वो नहीं कि अंडर कवर एजेंट टाइप का कि हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम रहेंगे गवर्नमेंट के साथ अटैच, ये बता देंगे, लेकिन वी कांट टेल देम कि हम IB के लिए एग्जैक्टली काम करते हैं. ऐसा. और अगर कोई ऑफिसर ऑन ड्यूटी ही पासेस अवे, शहीद हो जाता है, तो तब भी हिज आइडेंटिटी इजंट रिवील्ड टू एनीवन? नहीं, इन दैट केस इट इज रिवील्ड. In that case it is revealed. अच्छा. Once this career gets over, even if you're retired, it's okay to tell. But during your job, you can't tell anyone that you are actually working for Intelligence Bureau. So it seems like you guys are able to maintain your identity very secretly throughout your career.
and you don't even want any recognition for it during that time. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अदर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. आप उनके साथ कैसे काम करते हैं या इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? श्योर. सो इंडिया में इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑलमोस्ट सिर्फ हम नहीं करते. आईबी मतलब इंडिया के अंदर हम लोग करते हैं डेफिनेटली, बट इंटेलिजेंस भी अलग अलग टाइप की क्लासिफाइड होती हैं. एज इन रॉ की जैसे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस रहेगी मोस्ट लाइकली, बाकी कंट्रीज में पॉलिटिकल से लेके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेके कोई साइंटिफिक एक्टिविटीज से लेके कुछ भी हो सकता है. वो रॉ कुड फोकस ऑन दैट. फिर ऐसे ही इंडिया के अंदर अगर टेररिस्ट अटैक्स की इश्यूज हैं तो डेफिनेटली आईबी माइट रेड फ्लैग इट. और देयर आर एनआई स्पेशल फोर्सेस के हिसाब से एनआईए भी होती है. एनआईए इज अ रिलेटिवली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, but it focuses a lot on very specific terrorist activities. It does not even involved in narcotics or all that. Then military intelligence होती है, so they get involved in border area intelligence gathering. अगर जेके में कोई वो है, जम्मू कश्मीर में कोई इन्फिल्ट्रेशन है, लाइक 1990s का केस भी हुआ था, तो जनरली मिलिट्री इंटेलिजेंस गेट्स इन्वॉल्व देयर. ऐसे ही फिर और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ है. एनटीआरओ में जनरली टेक्निकल डेवलपमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स आपकी. सो ये सब है मेजरली. एनसीबी इज आल्सो कंसिडर्ड एन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट्स not exactly police. It concerns intelligence regarding your narcotics flow in India or outside India. So these are also considered intelligence organizations. Primarily ये majorly organizations हैं जो कि currently India के लिए काम कर रही हैं for gathering different sort of intelligence. Some are also armed with taking actions, like NCB can arrest you, but IB can't arrest you. So I'm probably not answering your question here, but ऐसा होता है. 2017 में एक बिल आया था जिसमें IB को the government was really very much keen on giving powers to arrest, but वो successful नहीं रहा for some reasons. I can't tell you that, but yes. So ऐसा होता है कि तो IB ideally cannot. It can only provide your information to the concerned departments. Let's say इंडियन सॉइल पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो इसके बारे में जो आईबी की टेररिस्ट वाली टीम, इंटेलिजेंस गैदरिंग वाली टीम होगी और हमारी रॉ की भी कोई टीम होगी इसके रिलेटेड, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और आर दे जस्ट डूइंग देयर ओन इंडिपेंडेंट थिंग्स एंड are they competing against themselves? So obviously there is no competition. If at all there is, it's a healthy one. At the end, both of them have just one agenda to secure their nation. अब अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो अगर इंडिया के बाहर कुछ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक अफगानिस्तान में कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है इंडिया में, तो रॉ का काम है वो गैदर करना इन्फॉर्मेशन वहाँ से and then pass it on to the PMO, or probably after approval with PMO they'll pass it on to some concerned organization, be it NIA, be it Intelligence Bureau. Sometime if they even pass it into NIA, then NIA can involve Intelligence Bureau because IB का network ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा vast है. We have a bigger circuit comparatively. NIA is very focused on terrorist activities, so their team is very small. That might happen. तो कोई ऐसी नहीं होता. अब जैसे इंडिया में अगर कोई बात आ गई, अब सपोज करो कि अब इंडिया में कोई उनका स्लीपर सेल है, सो आवर जॉब इज टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एनी रेड फ्लैग्स कि जब कोई स्लीपर सेल एक्टिव होगा तो किस टाइप की हरकतें हमें देखने को, नोटिस करने को मिलेंगी किसी एरिया में सपोजिटली. सो दैट वर्क इज बीइंग डन बाय आईबी हियर. सो इट गेट्स हैंड ओवर आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो रॉ कांट रियली टेक एनी एक्शन अब्रॉड, राइट? सो जो भी हमें करना है, हमारे को अपने ही लैंड एरिया में ही हमें कोई एक्शंस लेने पड़ेंगे. तो इस वजह से आईबी और रॉ का इन्वॉल्वमेंट ऐसे रहता है. तो इट्स नॉट एग्जैक्टली एनी एंटी अगेंस्ट ईच अदर. So it seems like all these organizations are working in parallel on their own tasks and they consult each other as and when required.
तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हमारी इंडिपेंडेंस के बाद ही इस्टेब्लिश हुई होंगी, बट इनकी क्रोनोलॉजी या ऑर्डर क्या था और कब ऐसी नीड महसूस हुई कि हमें आईबी भी रखनी चाहिए, रॉ भी रखना चाहिए, एनआईए भी होना चाहिए, इन सब का क्या प्रोग्रेशन था ओवर द इयर्स? So Karan, I think you got something wrong probably, but Intelligence Bureau is a very old organization. It's not from 1947, it's even beyond that. I can't tell you what kind of missions we did, but Britishers ke time se Intelligence Bureau was active in India. You can call it back then it was like reporting to Britishers, but now it's to our Prime Minister or President of India, what you can say. तो पहले से आईबी का तो सेटअप था. इंटेलिजेंस गैदरिंग इज अ वेरी ओल्ड लाइक मेथड टू विन द वॉर प्रायर टू एक्चुअली गेटिंग टू अ हॉट वॉर. बट आईबी सो इवेंचुअली 47 के बाद आईबी वाज फाइनली वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कठिन हुआ. अब ऐसा ही होता है इवेंचुअली व्हेन यू फील सम नेसेसिटीज की कुछ मिसिंग था इस वाली एक्टिविटी में, so we take some actions and we probably deploy our resources to something which will solve this problem. We have identified one. So जैसे NSG का भी अगर बात करें तो NSG was particularly made after a point of time when terrorist attacks started happening in India and cities के अंदर. तो terrorist से डील करने के लिए अब आर्मी ऑफिसर्स या कमांडोज जो थे वो हमारे जंगल वॉरफेयर या फिर डेजर्ट वॉरफेयर या माउंटेन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड होते हैं. लेकिन एनएसजी कमांडोज अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड होता है. तो 2611 में डिप्लॉयमेंट हुई थी अर्बन वॉरफेयर के लिए एनएसजी कमांडोज की. सो ऐसी टीम्स जो है ये बनती रहती है इवेंचुअली आने वाले समय में. दैट इज हाउ इट वर्क्स. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. सो एनआईए भी अगर हुई होगी तो किसी इस रिक्वायरमेंट होगी. ऑनेस्टली आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ द ओरिजिन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस. तो इसका मतलब है कि अभी भी पॉसिबल है कि देयर माइट बी सम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो बनने की प्रिपरेशन में होगी इंडिया में, व्हिच वी माइट नॉट नो अबाउट, बट इट माइट बी कमिंग अप. सो डेफिनेटली आई थिंक दुनिया बदलती रहती है. जैसे कंपनीज अपने स्ट्रैटेजीज बनाती रहती है, वैसे ही गवर्नमेंट का काम भी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना है, अपने लिए नए डिपार्टमेंट्स बनाना है. That is how it works, the world works. So definitely बनता रहता है, but ऐसे कोई publicize हर चीज़ नहीं की जाती, and that is how it is supposed to be for the best results. Yes, so you are right, ऐसे बनते रहता है. तो अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आईबी ऑफिसर्स की वर्किंग स्टाइल, वर्किंग लाइफ के बारे में. कि आई वांटेड टू नो कि क्या ऑफिसर्स डेली रूटीन में ऑफ लेते हैं, अपने घर पे रहते हैं, घर से बाहर पोस्टेड रहते हैं, फैमिली को विजिट कर भी सकते हैं कि नहीं, उनकी जॉब लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है, क्या वर्किंग कल्चर होता है. एंड इन एडिशन टू दैट कि अगर उनके पास सपोज कोई इमरजेंसी आ जाए तो हाउ क्विकली दे हैव टू रिस्पॉन्ड, ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो डेफिनेटली एक जॉब ये वाली जो है आईबी की, ये थोड़ी इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीमार हो और आपको लगता है कि आज छुट्टी ले लेते हैं या मन नहीं कर रहा वीकेंड ऑफ ले लेते हैं. कोई वीकेंड्स नहीं होते पहली बात तो. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट वी डोंट हैव अ वीकली ऑफ, बट इट वुड बी डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स आर अराउंड योर एरिया. तो अगर generally it's a high time to work, let's say prime minister visitor, chief minister visitor, so I be get active quite a lot उस टाइम पे, क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी भले ही उनके जो स्पेशल वो रहती यूनिट उनके कंट्रोल में है, लेकिन कोई एक्टिविटी बिल्डअप होने का कंट्रोल भी आईबी को इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है. इफ देयर सपोज टू बी अ दंगा और क्रिमिनल राइट्स और कोई भी इश्यूज ऐसे आते हैं तो उस टाइम पे आईबी ऑफिस की लाइफ माइट गो टू एनी एक्सट्रीम्स. बट ड्यूरिंग नॉर्मल डेज इट्स आई वुड से दैट इट्स relatively peaceful job. It gives you enough time for your family, for your friends, going out,
लंबी छुट्टियों की बात करें, it can get a bit tricky sometimes to take a week or 2 week off, because definitely situation might worsen any time about anything. So depend on किस type की area में you are posted for some years. If you are posted in a very red zone, you can say it's very active zone, it can be problematic. Like let's say you are supposedly posted in Chhattisgarh, where Maoism problems are there quite a lot. So getting off or something like that, taking off, it's a bit tricky. So main focus हमारा यही रहता है कि जब job चल रही होती तो otherwise it's a very routine job. You go to office, if there are things that have been again red flagged, or you meeting your network and they are giving you some sort of information, you think that is supposed to be taken action on, then it starts taking its shape. But before that ऐसा नहीं होता कि हमारे को बहुत काम ऐसे बहुत ज़्यादा रहता है कि we are continuously active on our job, and it's a job at the end उस केस में. But it's a responsible one. We have to respond to our calls always. So your job can be a office job, but it can also be a field job where you're posted in some red zone or something. Field job, yes. Field job it is. It is by default a field job, but like it's a routine field job, I'll say. बाकी अगर कोई बहुत severe activity होने वाली, definitely it will be hell. It would be 24 hours, forget 24 hours. You won't sleep for 48 hours, 72 hours or whatnot. How secure is it, your job? It's a secure job in a way, as long as no one finds about it. So we don't tell anyone that. That's why. So because we are never fixing things. We are just telling someone to fix things. We're always, but we are there to tell them that there's something is wrong. That is our job. But IB के अपने field operatives भी होते होंगे, informants या वैसे लोग जो information gathering तो field पे ही होती होगी. So IB would have its own field operatives as well. Well, Karan, I think that's question we can skip because that is supposed to be a secret. I would just say, pass it on. Okay. And what about like identities? Do you have to change your identity as well at times? Not really. I mean, as long as you have to go to an area which is really insecure and you have to mix with the crowd, then it makes sense to do that. Otherwise, changing identity actually is a risk, to be honest. Like, it's very easy to get caught up if you change your identity. Let's say you were trying to be a Naxalite. They have their own protocols. You don't know all of them. One mistake and you're done. So changing identity is a very severe step. It might be like the most extreme step you can say. तो आपका एक डेली वर्किंग लाइफ कैसी रहती है? What does your day look like, a typical day? How does it start? How does it end? So generally, it's normally you go to office at the office hours. We have our offices. Obviously, we don't tell anyone that IB का office यहाँ पे है. Just go to office, do your job, probably talk to a few people, come back. That's how a normal day is. But genuinely hectic work day might go to any extent. You might be supposedly कहीं दंगा हो रहा है. दंगा होने से पहले का जो समय assessment होता है, that is really like that involves a lot of work from the side of IB. 3-4 दिन अगर हो रहे हैं और things are getting worsening up eventually, तो IB का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे. You have to consistently analyze the threat that is there. I know it might be classified, but I'll still ask it. कि आप अपनी किसी ऑपरेशन के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं जिसमें आप इन्वॉल्व थे?
I think Karan, I'll answer it very rhetorically. Um, there's a movie that I really like, John English. उसमें एक सीन था, पहला सीन था, तो जॉन इंग्लिश इज दिस मिस्टर बीन कैरेक्टर. तो वो पहली मूवी में काफी वो एक बंदे से काफी मोटिवेटेड रहता है, काफी इंस्पायर्ड रहता है. ही इज अ वेरी स्मार्ट स्पाई, यू नो. तो इवेंचुअली वो उस स्पाई का एक कैरेक्टर ट्रेट ये था कि वो कोई उससे कुछ पूछता था, वेयर वर यू टुनाइट, तो बोलता, इफ आई टेल यू आई विल हैव टू किल यू, एंड यू कैन प्रॉब्ली फाइंड द आंसर देयर. Okay, understood. So, अब हम सब न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि पुलिस इज जनरली इन्वॉल्व्ड अ लॉट इन almost all of the kind of cases that you said IB is usually involved in. तो it seems like police और IB काफ़ी आपस में interact करके काम करते हैं. So what is the working style between IB and police? Okay. So like I told you already, it's like police is our working hand, not our government's working hand. So obviously there is some sort of state central problem because intelligence bureau eventually reports to the central government and police reports to the state government. The governments might be different and there might be some conflicts of interest, but overall, if we have any information, police, we have to pass it on to police. We have to make some arrest. That's some accused or someone who's there who is potential threat. So we'll get police involved and we'll arrest him through police. Which yeah, so that's how it works. Eventually, we'll have to work in tandem with police. So अभी हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि लाइक हमारे लॉट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस आर प्रॉब्ली इन द एज वेयर दे हैव टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर करियर. तो आईबी या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में मैं थोड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानना चाहता हूँ. हाउ डू यू एंटर दीज ऑर्गेनाइजेशंस? इज देयर एन एग्ज़ाम जिसको दे के आते हैं, या इज देयर अ बैकडोर एंट्री, कनेक्शंस? हाउ डज इट हैपन? So, मैं पहले आईबी की बात करता हूँ. आईबी के लिए रिक्रूटमेंट के दो तरीके हैं, which are very public. It's not something which we hide or something. So first is IPS, naturally. So intelligence bureau के senior most officials होते हैं. Generally they are from IPS. And the director of intelligence bureau is the senior most IPS of the country. Generally he's a 4-star officer, which is like equivalent to a chief of army staff. He's a public figure, right? He's a public People figure, know that yes. he is the... Yeah, of course. उसके नीचे जो भी रहेंगे वो generally they might be undercover, they might not be. But IB का इसके parallelly पुलिस में जो IPS senior most रहेगा वो generally पुलिस कमिश्नर या फिर DGP of a state is going to be. So he's a 3-star officer. That is how it's working. अब दूसरा तरीका आईबी में जाने का है, इस ACIO का एक पेपर होता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का. यू कैन अपियर इन इट. उसमें जनरली आपका जैसे बाकी SSC वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इट्स कंडक्टेड एनुअली और लाइक बाय एनुअली. The information is given in employment news or online. You can just check which is the exam is getting conducted. उसमें आपका जनरल स्टडीज का पेपर होगा, आपका इंग्लिश वर्बल का पेपर होगा, कोई ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह. You prepare them and you just prepare for the exam. After that there is a second round of writing exam again. एक subjective paper एक और होता है, फिर उसके बाद एक interview होता है, and that's how you get recruited. That's how it is. So there are the 2 entries for IB. तो ये जो एग्ज़ाम, इसकी प्रिपरेशन, ये सब at par with SSC exams होती है, या फिर there is a special subject? Or probably because I have a feeling कि intelligence gathering requires a different skill set, maybe. So that kind, I think the job is not more about IQ, it's more about EQ. And when you give an interview, there are points which is the EQ points are covered there. But having said that,
ये भी बात चल रही है कि हमें इवेंचुअली इंटरव्यू को पूरी तरह स्क्रैप आउट कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ लोगों को ये लगता है कि अनफेयर है राइटिंग पेपर में इंटरव्यू में काफ़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है एग्जाम के टाइम एग्जाम के बाद रिक्रूटमेंट सो इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी आर सपोज टू ऑनर एवरी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन so that might get scrapped out that might happen so but more or less it's on a similar lines with SSC it's not very different जो IPS राउट है उसके अंदर भी व्हेन यू बिकम एन IPS ऑफिसर आपको अप्लाई करना पड़ता है और दी IB folks keep on tracking you when you become an officer और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है if they see if you are right they just call you. I think IPS से so IPS trainees का deputation का option होता है and that's not just with IB it's with RAW with BSF with CRPF like so IPS officers always take the prime positions and all the armed forces or like not the military or defense forces but the non-defense forces you can get paramilitary as well like CRPF BSF CISF senior most position वो सब IPS officers की जाती है so they go on a deputation there that might depend कि आपका recommendation कैसा है how well you are with your seniors or your ministers or the governments you work with how well they recognize you and then they will eventually or you have a lot of interest they identify that of course you'll need to cross some amount of your कुछ एक अलग level की competence होनी चाहिए आप में तब they'll consider you for that. So it's probably that this cross hiring or deputation only happens at higher levels. Entry level पे तो एग्जाम ही एक वे होगा. Right. So आपने IB के लिए बताया कि 2 pathways है एंटर करने के लिए थ्रू IPS एंड वन अदर थ्रू द एग्जाम. सिमिलर pathways हैं रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भी क्योंकि मैंने एक दिव्य कीर्ति हैं एक्स IAS ऑफिसर उनका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर आप आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं होता है देन रॉ माइट अप्रोच यू फॉर सिलेक्शन इनटू देयर एजेंसी. डज इट हैपन लाइक दैट? तो ऑनेस्टली इस प्रोसेस के थ्रू मैं ज़्यादा फेयर हूँ नहीं हो सकता है ऐसा होता हो सकता है ऐसा ना होता हो रॉ वालों ने मुझे वही बताया नहीं बट डेफिनेटली IAS के थ्रू एक रूट है जो मुझे पता है कि वंस यू गो टू द अकेडमी LBS आई मीन लबासना जिसे बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IAS का जहाँ पे ट्रेनिंग होता है या IPS IFS वगैरह का सबका इनिशियल 3 months का ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पे रॉ गोज फॉर रिक्रूटमेंट सो देयर इज अ सर्विस कॉल्ड रॉ अलाइड सर्विस RAS if you so they interview you and test your whatever skills they want to so if they really like your profile so you can apply for that if you get shortlisted interview you can join RAS as a service and you can just leave whatever service was allotted to you prior to joining Labasana like आप IPS थे probably अब आप RAS में चलेगा IPS doesn't matter anywhere now that is one route the other is via deputations like IB से जनरली लोग काफ़ी जा सकते हैं या फिर NTRO से सर्कुलेशन के थ्रू जा सकते हैं या फिर मिलिट्री इंडियन आर्मी से बहुत लोग जाते हैं रॉ में टेम्परेरी डेपुटेशन के लिए. And is there by their own choice or is there because raw needs them? So obviously हर चीज़ चॉइस पे भी नहीं होती बट हर चीज़ वैसे भी नहीं होती कि आपका मन नहीं है तो नहीं करोगे और I mean the government might ask you and if you are reasonably convinced you can go there otherwise it's okay. Generally army people they are trained mentally to accept any sort of challenge they were thrown to तो उनके लिए रॉ कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे कि मेरे को डर लग गया तो that is how things are and our job is to actually gather information so we also get exposure to organization if we go abroad or gather intelligence outside so yeah I mean no one really ditches these sort of offers why not. You mentioned abroad IB में रह के भी बाहर की पोस्टिंग्स मिलती हैं इंडिया से बाहर की रॉ के थ्रू तो डेफिनेटली मिलेंगी मोस्ट लाइकली मिल जाएंगी otherwise I can't tell you.
So let's say that you are done with your exam, you got selected, interview हो गया, उसके बाद आपका probably training period रहता होगा. So how does the training period look like? आपकी क्या सिर्फ physical training होती है या फिर there are some mental exercises and probably training you in guns warfare as well? So पहले I think training से भी पहला important चीज होता है आपका background verification. And IB does an extensive type of background verification. IB and police both get involved, and they'll just not do your background verification. The complete family goes into the background check. This is the only one of the very few organizations which does your complete family background verification. Uske baad, when you get into training, generally the batch might be from 90 varying to 150 or 100. It's generally 100. We get to go to our academies and हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे eventually. So the prime focus is intelligence gathering as we are. Combat skills जो हैं वो इतना focus नहीं रहता. It's basically for your self defense basic, because like I told you हमारी जॉब में इतना मार धाड़ ये सब नहीं होता. It's more about gathering intelligence smartly as much as you can. The focus lies there. But so we are trained in combat skills basics to just defend at the base level. So that is how the training works. तो जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, so उसके बाद what does a new recruit look for in the career? तो वो अपनी करियर ग्रोथ कैसे देखता है? लेट्स से 20 साल बाद वो अपने आप को कहाँ पहुंचा हुआ देख सकता है, और आईबी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहता है, और रिपोर्टिंग कैसी रहती है, सीनियर लेवल की पोजीशंस, रैंक्स क्या क्या होते हैं? तो सीनियर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आई कांट टेल यू ऑनेस्टली बिकॉज इट्स सपोज्ड टू बी about the working of IB. I can't tell you, but there's some sort of equivalence between police ranks and intelligence bureau ranks. So if you want to say like parallelly we can get retired for an ACIO who's recruited as an ACIO, he might get retired at a DIG sort of level. How much DIG senior as good as like it's IB officer वहाँ पे retire हो सकता है. He might wield that much amount of power. And pay scale is also similar. Yes, pay scale would be very much similar too, as long as you are not on special deputations. Your pay scale would be similar. Are there like additional benefits, perks which you get as an officer? I think in organizations में perks and benefits जो होते हैं वो it's more of like the power and connects that you have. These are the key benefits and perks. You might almost solve any problem you have in life regarding social issues you might face. Let's say किसी से झगड़ा होगा तो you are the one who's going to win anytime. Yeah, don't get involved in such mess definitely, but like if you do, you have very strong connections to sort things out at your level. The biggest of the problems. Yeah. तो since IB रॉ इन सब के बारे में जनरली पब्लिक को पता नहीं रहता है, एंड आई थिंक जब आपने इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया होगा तब आपको भी इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा कि IB भी कुछ है या फिर उसमें भी जाना है. तो हाउ डिड योर इंटरेस्ट शेप अप कि I'll go to IB and I'll join this organization? मेरी स्टोरी से ज़्यादा कोई मोटिवेशन मिलेगा नहीं किसी को. मैं एक्चुअली बीकॉम की प्रिपरेशन बीकॉम कर रहा था अपना आराम से, और आई वॉज ऑल्सो ट्यूटरिंग सम किड्स. तो किड्स मतलब मेरी एज के थे ऑलमोस्ट, बट दे वर फिलिंग फॉर्म्स फॉर IB. उन्होंने बोला भैया आप भी पढ़ दो, हमने पढ़ दिया, मेरा हो गया, उनका नहीं हुआ. तो ऐसा बहुत ज़्यादा वैसा नहीं कि बचपन से देशभक्ति का कीड़ा था या कुछ ऐसा नहीं. इवेंचुअली आई मीन आई लाइक माई जॉब, आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डू, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था. उस टाइम पे मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह काम कर रहा था. 20-21 साल 18 साल में कौन क्या सोचता है.
I think that comes with maturity and responsibilities, that what you're doing is really meaningful. अभी movies देख के लोग काफी inspire हो जाते हैं, लेकिन actually में the work is much more dirty sometimes. Dirty in the sense ऐसे नहीं ज़्यादा मार काट या assassination मसले नहीं, ऐसा नहीं. It's mean to say कि you might not like it every day. There are days you'll like it, there are days you'll hate it. So is there something in particular which you don't like at all? I can't tell that, Karan. I think there are certain things in every job that you don't like, and that's how life is, and that's how life of an IB officer is. So आप जो हमारे जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या अभी अपने स्कूल की लाइफ को भी बस ख़त्म करने वाले हैं, उनके लिए आप कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगे इफ़ दे आर लुकिंग फॉर IB as a career option or other intelligence organizations? मेरी बस एक ही एडवाइस है कि if you're looking for money or a lot of recognition, social fame, then IB is definitely not for you. The job has its own perks, and these are not certainly one of them. You'll feel much more peaceful, proud at what you do for the country. That's there. And if you derive any sense of fulfillment from that, then IB is a great option, definitely. And otherwise, yeah, I mean, do your best at what you do. I think that's enough for your country, as much as you can do. So, थोड़ा recent times की बात करते हैं. Traditionally, warfare was of different kind. You had to build bombs, you had to carry them, you have to depute soldiers and go into the war. But आजकल with the advent of technology, cyber warfare is there, chemical attacks can happen. So is India adapting to all these things, and how extensively IB is looking at these new technologies and building its own expertise in these? Sure. I mean, जैसे एक पहले मैंने बात बोली थी कि हर चीज की स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी है. एज अ कॉर्पोरेट ऑल्सो एज अ कंपनी आपको कंसिस्टेंटली मॉडर्नाइज करनी होती है अपनी चीज़ों को. तो इफ एट ऑल यू कैन जस्ट like hit a country badly by taking over its economy, like एक बैंक सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया for maybe a few hours, the economy would crash. And because of all this, there's a very, very important stress that is being laid upon cyber warfare, improving a banking system, immunizing it with the attacks, foreign attacks. Stock markets have to be immunized, and all these things. I wouldn't say that this is all concerned with IB particularly. This is all what I'm just saying from my reading knowledge or anything. So definitely IB जैसी organizations, they are looking into it to improving upon their intelligence. I mean, they're working on improving their ecosystem around technology and softwares. But so yeah, we are actively looking into that, and how things would pan out is a different game. So we'll see how much motivated students we can get or whatever. We are definitely actively looking for people who are smart and who are really motivated to do something. बस मुझे एक लास्ट पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है ये कि in the beginning you had said कि IB gets involved when there is an issue of national security. अब लेट्स से आजकल इतने स्कैम्स चल रहे हैं, जैसे कि जो लोगों से फ़ोन पे OTP लेके उनके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं. तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली नेशनल सिक्योरिटी, इट इज़ प्रॉब्ली फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री. बट इफ IB गेट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस, कैन दीज इश्यूज बी सॉल्व्ड? I think these issues can be solved. It would be very wrong for me to say कि ये issues solve नहीं हो सकते. I would always say that हो जाएंगे if we really get involved. But the problem doesn't lie there. अगर if you fix someone or some criminal or a nexus, you completely hit it, there would be someone who's waiting next.
So the best way to counter this is by information spreading to aware people about it, and that's what government is doing right now. It's important to understand for people that किसी को भी अपना OTP नहीं देना, किसी को भी अपना टीम व्यूअर लगा के नहीं देना मोबाइल्स पे. For that matter, अपना मोबाइल ही किसी को नहीं देना आज की डेट में. Like this, the other day I heard a case जहाँ पे शॉप पे किसी बंदे ने किसी से मोबाइल मांगा 2-4 मिनट के लिए और 25 लाख गायब कर लिए उसके. बोला कॉल करनी है सर. नेचुरली ह्यूमंस हम लोग हेल्पफुल होते हैं, उसे दे दिया 2 मिनट में. उसने उसके मोबाइल में क्या किया, उसने 2 दिन में 25 लाख गायब कर दिए उसके अकाउंट से. सो this level of information awareness has to be spread, and now we are looking at digitalizing our finances more or less. We are looking at UPI, and we are looking at a number of fintech areas, and we are actively involving our population across from all the hierarchy of social levels. So definitely हमें awareness spreading पे बहुत focus करने की जरूरत तो है, and we are doing that. We are doing our best. Thank you so much for being with us and sharing such valuable information. I know that you don't work for appreciation, but I really salute the way that you have been working for us and the country. Thank you, Karan. Thanks a lot. I really enjoyed the conversation, and we really hope that like folks get motivated to join IB and they do their best at the job. That's how we secure a nation. That's what we are looking at. So thank you so much for giving me this opportunity to get interviewed by you. And yeah, it was nice. Thank you.